Yes, yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Joined. Okay, so they're coming. So we can have the kirtan now, and then we can start with our little discussion in here. The power of the women. This is an interesting subject matter because it's a main subject matter. Okay, there's so much to talk that I don't know if I can talk everything or even a little bit. So we'll see. We're gonna go slowly. Okay, Neha, you ready? Oh, yeah. Okay, so let's do it. Maybe when Namaon Vishnu Padaya. Let's see Prabhupada, see Krishna Chaitanya, and then three Hare Krishna. We're ready to go. Okay. Yeah, we have 1 minute more to go. Anybody want to say anything before we go global? Isha, where are you now? I'm at home. You are where? I'm at home. No. Home, What home. town? What town are you? Gujarat, Vadodara, Baroda. Oh, wow. Other side of the country. It's good. This is very nice. Okay. Let's start. 6 o'clock. 6 o'clock. Okay. Go for it now. Anuradha joined. What is it? Oh, boy. Tell her about it. Krishna Krishna Ramo Ramo Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Introduce it. Everyone's sharing. Thank you. Jaya Guru Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Haribol. Wait. What is this? Ah, this one. Look at that. Yes. Thank you, Neha. Beautiful. Okay. So now we're gonna just a side talking here. We're gonna find out double microphone and make that everybody can sing. We do that next time. Okay. We're gonna improve every time, but this was a big improvement. Thank you so much. So everybody's here. I want to introduce our Anuradha Krishna Prayadasi Devi. This is, she's right there. She's the founder of Pray and Preach. She's the one who developed all this, from her, all these platforms came to be, and we're here now. And I asked her to give the inauguration address of this podcast. Bhakti Force. Bhakti Force. Hare Krishna, everyone. Please accept my obeisances, especially Prabhuji. Please accept my most humble obeisances. This is such a nice, great platform, especially for women. I'm supposed to speak something, but unfortunately I couldn't prepare. But since I was reading the first canto for my exam, I came across these beautiful prayers by Queen Kunti, and the exemplary examples are already given in our Vedic scriptures, how women should be, and how amazing they are, that any difficulties they can handle with so much of tolerance. Like if you see the example of Queen Kunti, she went through the hell actually, but she had this tolerance in her heart, the determination and devotion towards Krishna. It's also mentioned that she's been referred to as Sati. That Sati means that someone who is completely devoted to one person. So she's Sati for Krishna. No matter so many sufferings came in her life,
we all know this history of Mahabharata, right? But she was very much dedicated and devoted towards Krishna, that, okay, I'm not going to take shelter of any um, um, just mundane person, but I'm going to always take shelter of Krishna. No demigod, no living entity, just Krishna. So of course, there a lot can be said about so many amazing Vaishnavis, including you all are, who are always my motivation when I see the sadhana reports in the official group of Pray and Preach. I get so motivated that okay, I also have to improve my japa, my sadhana. And even though Prabhuji and Paripurna Mataji give me all the credit of being the founder of Pray and Preach, I know myself that I just made this, and who is doing everything behind is just Mataji and Prabhuji. So I am nothing if they are not there in Pray and Preach involved. So thank you so much for starting this session. And yeah, this is a very important session for especially young girls like us, because we are going to talk about this every session, but we also have to understand that we women, we are a prize and we are a gift, and we have to be protected in all aspects, in all ways. So I'm really happy that we have started this session to open our eyes also, and to be saved, and to be happy in Krishna consciousness. So with that, I'll end. I hope what I tried to say was understandable and appropriate. Thank you, Anuradha Mata. Beautiful. So we have in here, yes, people are coming in, and this Gauri is here, and okay, this Isha would say something. She will say. Isha will do the Hindi translation. Isha, you want to do a little bit of translation, what was said, a little bit, just a gist for this long, talk. She's our host. And Isha, for everybody, she's our host in here. This is the Bhakti Force, yes. And thank you so much, Isha, for you to coming. And I still have a little difficulty dealing with all those little thumbnails all over the place. But anyway, we're gonna do good. And God is there too, and everybody's there. Okay, Isha, you can just say a little bit, don't get a little gist in the Hindi there. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Sabhi ko mera dandat pranam. I'm sorry, I missed some of it because of some poor network. Hare Krishna, Anuradha Mataji, thank you so much for joining. Hare Krishna, Neha Mataji, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर कीर्तन के लिए. And of course, many thanks to His Grace Bhagavatamrta Prabhu and Paripurna Mataji for giving us this lovely platform. We see you. So, Anuradha Mataji Pray and Preach group के founder हैं, और अनुराधा माता जी ने ये सारा जो प्रे एंड प्रीच है, भक्ति फोर्स है, वो उन्हीं के इंस्पिरेशन से हम कर रहे हैं, उन्हीं के गाइडेंस से हम कर रहे हैं. तो हम अनुराधा कृष्ण प्रेयसी माता जी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. वो बहुत बिजी हैं, बट स्टिल वो हमारे लिए ज्वाइन कर रही हैं. और उन्होंने बहुत सुंदर हमको एक अगर हम स्त्री की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सबसे एक प्रमुख एग्जाम्पल जो हमारे सामने आता है वो कुंती महारानी का आता है. और हम उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. जैसे माता जी ने बताया कि कुंती महारानी का जीवन जो है वो बहुत सारे संघर्षों से गुजरा. उन्होंने ऐसे ऐसे संघर्ष पार किए जो हम जनरली नॉर्मल लाइफ में, आम जिंदगी में, अगर हमारे ऊपर ऐसे कुछ कष्ट आ जाए तो शायद हम भगवान के ऊपर विश्वास करना तो दूर की बात है, हम शायद जीना ही बहुत मुश्किल लगेगा हमें. लेकिन कुंती महारानी ने इतने विषम परिस्थितियों में भी वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही उन्होंने अपनी आसक्ति बनाए रखी. तो जैसे माता जी ने कहा कि वो सती थी. सती माने कि वो व्यक्ति जो कि किसी एक ही जन के लिए, एक ही पर्सन के लिए डेडिकेटेड है, सरेंडर्ड है. तो कुंती महारानी वही थी, और उन्हीं से हमें इंस्पिरेशन लेना है कि हम कैसे हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं आगे.
Okay, thank you. All right, so today we're going to discuss a little bit of the women Shakti, the power of the women. But the first thing is we should discuss the power of women and also discuss how that, what about the man? Because the power of women is in relation to the man. So the man should be there to understand the power of the women, so the power of man is manifest properly. So the women can have their power manifested. तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है जिसके ऊपर प्रभु जी चर्चा करने वाले हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि नारी शक्ति के बारे में है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि समाज के दो पहिए हैं, एक स्त्री है और पुरुष है, तो केवल स्त्रियों को शक्तिशाली या केवल स्त्रियों को एम्पावर करने से, केवल स्त्रियों को आगे बढ़ाने से ही नहीं होगा, उसमें पुरुषों का भी उतना ही योगदान होना चाहिए। अगर पुरुष योगदान नहीं देंगे तो स्त्रियां एम्पावर नहीं हो सकती, उतनी शक्तिशाली नहीं बन सकती। सेम वे पुरुषों को भी अगर आगे बढ़ना है तो स्त्रियों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही स्त्रियों के लिए भी पुरुष के पर्सपेक्टिव की, पुरुष के आधार की जरूरत है। So this is a very interesting, I want to approach in a way that best to be understood. The power of the women is the power of to focus her to I just gonna go straight to the matter. The power of the woman, the superpower of the women, the mystical power is her power of chastity. I'm going to go there in a minute and explain what is this chastity. तो स्त्रियां जो हैं उनका एक बहुत ही ऐसा गुण है जो कहीं और किसी और में हमको नहीं मिलता है, किसी और पुरुषों में कहीं और हमको देखने नहीं मिलता है। जो वो स्त्रियों में जो एक महान गुण है वो है चैस्टिटी, यानी कि शुद्धता, उनका सतीत्व। तो वो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है और प्रभु जी उसी विषय के ऊपर अब आज अभी चर्चा करेंगे। यस प्रभु। The man, the bad man, or the man who is not trained, he's always tried to break that chastity, and then he will consider that some kind of a victory for himself. And this is always the look in that. So the woman has to be smart, protect herself against this. जो पुरुष है, जो अच्छे विचार वाले नहीं होते हैं, जो खुद दूषित मनोभाव वाले होते हैं, तो वो पुरुष स्त्री की चैस्टिटी को, यानी कि स्त्री की पवित्रता को भंग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो स्त्रियों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को बहुत ही हम जैसे कहते हैं अलर्ट होना चाहिए कि जिससे पुरुष उनके साथ ऐसा ना कर सके, वो अपनी पवित्रता बनाए रखें। So, because I remember right when me and my wife, we start to do the counseling. Now we have a very young girl. She was like maybe 14, 13, and she was kind of, there was some puppy love with this boy, and the boy was taking advantage, and the temple come to know and send the boy away to his country. तो जब प्रभु जी और माता जी ने काउंसलिंग की शुरुआत की थी, शुरुआत में तो उनके पास एक ऐसी लड़की आई जो कि काफी यंग थी, काफी छोटी उम्र की थी, और वो किसी लड़के के साथ संबंध में थी, और लड़का जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही मंदिर को इस चीज के बारे में पता चला, मंदिर में जब इस चीज की खबर गई तो मंदिर के अथॉरिटीज ने उस लड़के को वापस अपने देश में भेज दिया। वो विदेशी लड़का था तो उसको अपने देश में वापस भेज दिया। The boy went to this country and she came to us. She was crying. Like she was like crying. I'm not making fun of her, but I was so, how she can be so affected by this situation. You see, I was surprised. जी, तो वो लड़की जब हमारे उन प्रभु जी और माता जी के पास वो लड़की आई जो अफेक्टेड थी इस चीज से, किसी संबंध में थी जो कि सक्सेसफुल पाया, लड़का तो अपने देश चला गया और ये लड़की जो है वो प्रभु जी और माता जी के पास आई और बहुत रो रही थी। तो प्रभु जी ये सोच रहे हैं कि वो लड़की किसी लड़के के साथ इतना से जुड़ाव महसूस कर गई कि इतना वो ये चीज अफेक्ट कर रही है।
So this affect, of course, the girl now is 20 years old. And if you ask, well, what about this boy? Who is this boy? You know, it doesn't exist anymore. But it was a very difficult moment at that time. And it marked her heart. तो हमको अभी ऐसा लग सकता है कि वो लड़का तो चला गया अपने देश, अभी तो वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उस लड़की के मन में, उसके हृदय में वो लड़के ने बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी. इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी उससे. So therefore, see, the power of the women is to refrain from give her mind, give her emotion to anybody. She keeps to herself in the heart until she is authorized to give that emotion in the dharmic way to the person that will be her future companion, by the parents, by the guru, by the associate Vaishnavas, like that. तो लड़कियों को, स्त्रियों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली, भावनात्मक तौर से किसी भी पुरुष के साथ जुड़ नहीं जाए तब तक, जब तक कि उसको अथॉरिटी नहीं मिल जाती, जब तक कि वो खुद सक्षम नहीं हो जाती है, जब तक उसकी सही उम्र नहीं होती है, और जब तक उसके माता पिता हैं या उसके गुरु जो हैं, जो उसके सीनियर हैं, वो जब तक उसको ऑथराइज नहीं करते हैं, तब तक उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए. So this is the super. They keep in the heart until it's time by the proper situation to give the heart to the one that deserves that. Not anybody, not somebody from her head. No, that is the superpower, and she can do that. She becomes powerful in many ways. की पवित्रता की ये निशानी होगी अगर वो अपने मन मुताबिक बिना सोचे समझे किसी के साथ भी इमोशनली अटैच ना हो जाए, सोच समझ के स्मार्ट तरीके से, जब तक बड़े नहीं कहते हैं, जब तक बड़े उसको अथॉरिटी नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, तब तक वो आगे ना बढ़े. वही उसके लिए पवित्रता की सबसे बड़ी निशानी है. And he must respect that. He must respect that, because if he respect that, the divinity protecting the women. Remember, Krishna, he always protect the women, right? He's very kind to the women. And with him, the different divinities, celestial divinities, protect the women, the sincere women. If the boy respect that, then he will be protected and he'll find a proper, nice wife for him. You see, because he's respectful of the women. तो पुरुषों को भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब कोई स्त्री पवित्रता अपनी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी उसको सम्मान दे. अगर कोई स्त्री मना करती है संबंध में जुड़ने के लिए, तो उसे समझना चाहिए और उसे उस चीज का सम्मान करना चाहिए. अगर वो सम्मान करता है, पुरुष अगर सम्मान करते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज अच्छी होगी, क्योंकि आगे चल के उनको भी ऐसी ही पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्री पत्नी के स्वरूप में मिलेगी. You see, it works both ways. Okay, so the woman who holds in her heart, that's her austerity. The man, he can go in a cold river, he can go walk barefoot, he can do so many hard austerities, take cold shower in the cold river. But the women, the austerity is that they refrain from projecting her emotions in anybody until it's proper authorized. तो पुरुषों के लिए अलग अलग तरह की तपस्या करना बहुत आसान है. पुरुष जो है वो एकदम ठंडे पानी में स्नान करने जा सकते हैं और उस तरह से अलग अलग तरीके के तपस्या वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका पुरुष का शरीर है उनका. लेकिन स्त्रियों के लिए एक ही तपस्या है, और वो ये है कि उनको अपनी पवित्रता बनाए रखनी है, चैस्टिटी बनाए रखनी है. वही उनके लिए सबसे बड़ी तपस्या है. अगर वो ये तपस्या करती हैं, अगर वो पवित्र रहती हैं, सोच समझ के, सब जांच परख के अगर वो पुरुष के साथ संबंध में जाती है विथ द परमिशन, अपने बड़ों के परमिशन, बड़ों की आज्ञा के साथ, तो ही उसके लिए अच्छा रहेगा. बिना आज्ञा के उसको काम नहीं करना चाहिए. And there's many cases in the Vedic literature. One particular case which I study and like very much is the case of this
this boy, he was the son of the king, and he was somewhere in the forest, and within the forest, this girl comes in. She was some kind of a princess, and she went there, but somehow they met, and the guy becomes very enamored, and he said, okay, I want to marry you. See, that's the right thing to do. I want to marry you. So they make the arrangement. But you can go to that point, Mata. Go ahead. तो एक कहानी है, एक वेदों में से एक बात आती है कि एक पुरुष था, एक राजा था. He was the king, right, Prabhuji? You told about he was the king. What is that? He was the king. You talked about that Yes, person. he was the son of a king. The king was banished. He lost everything. So he was in the forest for some reason. Okay. तो And they were living in the forest, you know. तो एक राजकुमार था जिसके जो राजा थे उनको राज्य से निकाल दिया गया था, निष्कासित किया गया था. तो उसका पुत्र था, यानी कि राजकुमार था. वो जंगल में एक स्त्री से मिला और वो उस स्त्री से बहुत अट्रैक्ट हो गया, स्त्री से बहुत आकर्षित हो गया. तो उसने ये कहा उस स्त्री से कि वो उससे विवाह करना चाहता है. But the king, to have his child, something happened, and he got a boom to have the child. But the sage, the make the happy said, but your child will live 1 year after the marriage. He has to die. That was the you know, he get the kid, but once he married 1 year after, he has to die. It's like that. तो एक ऋषि थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके बेटे ने विवाह किया, विवाह के 1 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी. मतलब वो विवाह के 1 साल तक ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद वो जीवित नहीं रह पाएगा. But the girl said, I don't mind. I'll marry him anyway, because, you know, I made my mind, I made the vow, and I want to marry him anyway. So they married. तो जो लड़की थी उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, वो इस चीज को स्वीकार करती है. लेकिन क्योंकि लड़की ने, जो राजकुमार थे, उन्हीं को अपना पति स्वीकार कर लिया था मन से, तो और उन्होंने वादा भी कर दिया था, तो इसलिए वो ये वादा तोड़ना नहीं चाहते थे. उन्होंने मन से उस राजकुमार को अपना पति स्वीकार किया है. तो वो कुछ भी आगे होने वाला था उसको समझते हुए वो फिर भी विवाह करने को तैयार थे. So what happened is, after 1 year, no, she was crying, and the prince would say, what can I do? So he was waiting for his 1 year mark. He was ready. And this time, Yamaraj, he personally come. Yamaraj said, for this one, I will come personally. Because it was such a jamal in there, he said, I'll come for this one personally. तो 1 साल बीत गया और जो राजकुमार थे वो अभी इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी मृत्यु आएगी. तो 1 साल जैसे ही हुआ तो यमराज भी खुद स्वयं आए. यमराज ने सोचा कि इस व्यक्ति को, इस जीव को लेने के लिए तो मैं खुद ही स्वयं आऊंगा और किसी को नहीं भेजूंगा. So Yamaraj came and he took the boy and he was leaving, but she was following Yamaraj. And Yamaraj couldn't leave completely because she was following him. तो यमराज लेने के लिए राजकुमार को, और राजकुमार को लेके जा रहे थे, लेकिन राजकुमार की जो पत्नी है, जिन्होंने ये समझते हुए राजकुमार के साथ विवाह किया था कि 1 साल के बाद उनके पति की मृत्यु हो जाएगी, तो यमराज जब उनको लेने के लिए आए उसके पति को, तो स्त्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लग गई. तो यमराज पूरी तरह से जल्दी जा नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा था. So at one point he turns back and tell her, you go away. This is his karma. You cannot do anything about it. And she pleads, no, he's my husband. I cannot give up him. You know, I will follow him. No, you cannot follow. And like this, he kept going and she following. तो यमराज ने पलट के देखा, तो थोड़े से आगे गए, और फिर यमराज ने फिर पलट के देखा तो अभी भी वो स्त्री, वो आदमी की पत्नी उनका पीछा कर रही थी. तो उन्होंने, यमराज ने पत्नी को कहा कि आप जाइए, आप ऐसे नहीं मेरे पीछे नहीं आ सकते हो. आपके पति का यही कर्म था, आपके पति का यही नसीब है, उनको ये भुगतना ही पड़े, उनके पास के सिवाय कोई उपचार नहीं है, आप जाओ. तो स्त्री ने यमराज को कहा कि नहीं, वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग गई, बहुत ही भीख मांगने लग गई अपने पति के जीवन के लिए कि आप मेरे पति को कृपया करके
जीवित रखिए, उनको प्लीज आप मत ले जाइए। लेकिन यमराज फिर भी माने नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे पति को मुझे लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पति का कर्म है। So he keeps stopping, convincing her to go back. She keep convincing him, I cannot go back and forth like that. So he said, well, I give you the kingdom of the father back. I give you what you need, like that. So at one point, and she keeps following him. At one point, he said, look, I'll give you 100 children. So you can, because said I'm alone, like I'll give you 100 children, and no, now you leave me alone. And she kept following him, right? तो यमराज उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जाइए, और फिर बात यहाँ तक पहुंच गई कि यमराज ने उनको कहा कि मैं आपको राज्य दे दूंगा। मतलब बार्गेन करने लग गए कि भाई आप अपने पति को जाने दो, मैं आपको उसके सामने ये दूंगा, मैं उसके सामने वो दूंगा। बहुत सारी लालच दी उन्होंने, लेकिन फिर भी वो स्त्री अपने पति का पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो बहुत ही एडमेंट थी कि मैं अपने पति को लिए बिना नहीं जाऊंगी। यमराज ने कहा कि मैं आपको 100 बच्चे दूंगा, 100 पुत्र का वरदान देता हूं मैं, लेकिन अपने पति को जाने दो। लेकिन फिर भी वो नहीं मान। So he turned around and said, I gave you everything you wanted. I gave even your children. Now you have to go. And she said, but how are I going to have children if the husband is not here? तो जब यमराज ने 100 पुत्रों का वरदान दिया, फिर भी वो स्त्री जा नहीं रही थी। तो यमराज ने कहा कि अब तो तुम जाओ, अब तो मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो तुम चाहती थी, अभी तो तुम जाओ, अभी तुम क्यों पीछा कर रही हो, जाने दो अपने पति को। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरे 100 पुत्र होंगे कैसे अगर मेरे पति को आप लेके जाओगे? पति के बिना मेरे पुत्र हो नहीं सकते हैं। So he got caught in a situation. He promised something he couldn't fulfill. He has to give back the boy, and he did give back the boy, and the family of the boy got back their kingdom, and everything went back to like it was before, because of the wife that was very focused and it was very chaste to this boy. You see. तो यमराज अभी अपने ही वचन की वजह से बद्ध हो गए, अपने वचन से बद्ध हो गए। और क्योंकि यमराज ने कहा था कि मैं आपको 100 पुत्र दूंगा, उस चीज का वरदान दे दिया था, और पति के बिना पत्नी के पुत्र हो नहीं सकते हैं, इसलिए फिर यमराज को वो लड़के को जाने देना पड़ा, राजकुमार को उन्हें छोड़ देना पड़ा। और ना ही सिर्फ राजकुमार को छोड़ दिया, लेकिन उनके पुत्र भी हुए, उनको जो खोया हुआ राज्य था वो भी वापस मिल गया, और सारी उनके जीवन में जो दुख थे वो सारे चले गए। उनकी जिंदगी वैसे ही पूर्ववत खुशी से भर गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो पत्नी थी राजकुमार की, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र थी, सतीत्व उसमें बहुत था, और उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी वो। तो इसकी वजह से उसके पूरे परिवार को, क्योंकि वो स्त्री बहुत पवित्र थी, बहुत ही पतिव्रता थी, इसलिए उसके पूरे परिवार को इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। You see, she was smart, but she was very determined to follow her husband. But nowadays, the women, she's not have, see, in the Vedas, there's five persons that have to be protected, right? There is the cows, the brahmana, that is the, what was that? The women, the child. You see, these are the ones that have to be protected by the society. Otherwise, the women without the protection, the social environment to protect her, she may fall away from the position, from the position that she has. वेदों में हमको ये बहुत साफ तरीके से बताया गया है कि 5 लोगों का बहुत अच्छे से उनकी रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, बच्चों की और बुजुर्गों की। इन 5 जन की रक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये 5 क्लास ऐसे हैं, 5 कैटेगरी ऐसी है कि उनको रक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर उनको रक्षा नहीं दी गई, अगर उनको सुरक्षित नहीं रखा गया, तो हो सकता है कि वो गलत संगत में पड़ जाएं। खास करके स्त्रियां, अगर उनको हम प्रोटेक्शन में नहीं रखते, अगर उनको हम सुरक्षा नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि वो गलत रास्ते पे चली जाएं, गलत कंपनी उनको मिल जाए और वो रास्ता भटक जाए अपने जीवन का।
So, in the beginning, in the society, marriage, man got the idea that, well, the women should be subservient to the man. Okay? Some women, they cringe when they hear this. The man goes, yeah, right? So we're going to talk a little bit about that because it's not really like that. तो पहले के जमाने में या शास्त्रों में भी ये चीज कही गई है कि स्त्री को अपने पति के अंडर रहना चाहिए, यानी कि स्त्री को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमेशा उसकी आज्ञा के मुताबिक ही कार्य करना चाहिए। तो ये सुनकर आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती है, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं, लेकिन हम आगे जानेंगे कि ये क्यों सही है। The man, he likes very much to say that women should follow the man. But my question to the man is, are you leading or not? तो आदमियों को या पुरुषों को ये चीज कहने में बहुत अच्छा लगता है कि स्त्रियों को हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए या हमेशा उनके कहे मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन प्रभु जी का प्रश्न ये सारे पुरुषों से है कि क्या आप ऐसे कार्य कर रहे हैं कि स्त्रियां आपकी आज्ञा का पालन करें, या क्या आप ऐसे इस तरह से आप कार्य करते हैं कि स्त्रियां आपका अनुकरण कर सकें, क्या आप उतने अच्छे हो? Because as much as the women has to be chaste, the man has to know how to lead the partnership with the women. तो स्त्रियों को भले पवित्र होना बहुत जरूरी है, स्त्रियों की चैस्टिटी, उनका पवित्र होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही उतना ये भी जरूरी है कि अगर हमारे पुरुष हैं जितने भी वो भी अच्छे हों, वो भी आज्ञा का पालन कर सके, हम वैसे हों, वो भी लीडर, अच्छे लीडर हों, ये जरूरी है। If you think that you go to the women, you're newly married, you go to the women, you say, look, Prabhupada said here in this book, you have to do this, this, this. You're mistaken. You're not going to happen to lead that person. You're not going to happen. तो अगर आपकी नई शादी हुई है, अगर आप भक्त हैं और आप नई शादी करते हो अपनी नई पत्नी से, आप ये कहते हो कि देखो प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पत्नी का इतना इतना फर्ज है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि सिर्फ पत्नी का फर्ज नहीं, प्रभुपाद ने पुरुषों का भी फर्ज बताया है, तो वो अभी आपको सीखना जरूरी है अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। A man should know how to conquer the heart of the women, his wife, to have a partnership that she is very much involved in it, satisfied. And it's not easy for both of them. You see, it's a give and take. It's not just take from the man and give to the women. No. तो पुरुषों को जो है कला सीखनी चाहिए कि वो अपनी पत्नी का हृदय कैसे जीते, उनको उनका हृदय जीतने की कोशिश करनी चाहिए, उनका मन जीतने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो उनकी पत्नी है वो पूरे मन से, पूरी भावना से उनके साथ जुड़ी रहे। क्योंकि अगर आप विवाह करते हो तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, मतलब कि दोनों को ही झुकना पड़ेगा, दोनों को ही कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ पुरुष सिर्फ लेता रहे और स्त्री सिर्फ देती रहे, स्त्री सिर्फ सैक्रिफाइस करती रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों की तरफ से समान रूप से कार्य होना चाहिए। Sometimes we hear in the society, Prabhupada said, the women is the better half of the man. We hear that, correct? So sometimes I think if you treat your better half like this, how do you treat yourself? You know, this is no good, right? बहुत सारी बार हम सुनते हैं, प्रभुपाद से भी हम सुनते हैं कि स्त्री जो है अर्धांगिनी है, मतलब कि आपका आधा अंग है, और अगर आप अपनी पत्नी को ही इस तरह से, मतलब गलत तरीके से अगर आप उसके साथ व्यवहार करते हैं, अगर आप अपने आधे अंग के साथ ऐसे गलत व्यवहार करते हैं, तो आप अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। But the women, they should also be pure in the sense that they want to things that advance the Krishna consciousness of the prosperity of the family. They are not whiners of commerce. They are active. They are
extremely active in the household and do their duties nicely. So therefore, there is a joint together between the husband and the wife. You see, that's duties for both of them. तो सिर्फ पुरुष की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी पत्नी हृदय जीते और वो अपने परिवार के लिए सारी चीजें करे। स्त्री की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, स्त्री का भी उतना ही ड्यूटी बनता है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए सारे कार्य करे ताकि वो अपने परिवार को एक अच्छा भक्तिमय जीवन प्रदान कर सके। For the young girls, I advise that they should pursue their education judiciously, because sometimes the parents will not be there, or be a situation they cannot get the parents or the people around here to give a little support, not just financially, but in many different ways. She should be a little bit of self-reliant in her abilities, but always relying on Krishna and the devotees and the Vaishnavas. तो प्रभु जी बहुत जोर देकर कहते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं जो कि स्टूडेंट हैं, विद्यार्थिनियां हैं, पढ़ाई करती हैं, तो प्रभु जी बहुत जोर देके कह रहे हैं कि सभी को पढ़ाई पे, विद्या ग्रहण करने पर बहुत ही ज्यादा जोर देना चाहिए, बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी डिग्री लेनी चाहिए, ताकि आगे चल के अगर कभी आपके माता पिता आपके आसपास ना हो, या कभी आप अकेले हों, या कभी कोई भी तरह का सिचुएशन आए, तो आप एटलीस्ट अपने आप के लिए अपना जीवन यापन आप कर सको, आपको किसी की जरूरत ज्यादा ना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहो। आपको हमेशा हर रोज आप भगवान कृष्ण और वैष्णव के ऊपर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा, लेकिन विद्या ग्रहण करना, अच्छी पढ़ाई करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। I used to preach in Mississippi, America. Mississippi is a state south of the United States, next to Louisiana and Texas, and they consider that a very, the South is not very well developed. It came later after the Civil War, developed the industry and everything. The South was not so, bright in their development. And I have met people in there, we talk a little bit with the Karmi people in there. One time, one guy said, I take care of my wife. I want her barefoot and pregnant. And that's how I take care of her. He wants his wife barefoot and pregnant. And that is the best he can do. तो प्रभु जी अमेरिका में मिसिसिपी राज्य में प्रचार करते थे, तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा राज्य, मतलब डेवलप्ड राज्य नहीं, विकसित राज्य नहीं है। और वहां पे एक पुरुष था, वो अपनी स्त्री को बहुत गलत तरीके से उसको ट्रीट करता था, कि वो कहता था कि मैं उसको so I didn't get, what did he say, Prabhuji? Sorry. He said, women, it was talk about more or less like to treat a wife. I should have them barefoot, no shoes, and pregnant. No chapals. वो अपनी पत्नी के लिए कहता था कि पत्नियों को क्या अच्छे से हमें उनको ट्रीट करना चाहिए, पत्नियों को अच्छे से रखने की क्या जरूरत है, उनको तो नंगे पांव रखना चाहिए, जूते वगैरह कुछ दिलवाने की जरूरत नहीं है, और बस उनको आप वो प्रेग्नेंट होने के लिए ही, सिर्फ गर्भ धारण करने के लिए ही है, बाकी किसी चीज के लिए उनका कोई कार्य है नहीं, वो ये मानता था बाद में। So I was thinking, and this is not a devotee, right? There is some people there living. I was thinking, what kind of women this woman is, what kind of dreams and aspirations and development she can have. So I feel very sorry for her. I made a prayer, what else can I do? And I wish for the best, you see. तो प्रभु जी को ये सुन के बहुत दुख हुआ कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए ऐसा कह रहा है, और फिर हम स्वाभाविक तौर से उस तरीके के बारे में भी सोचते हैं कि उसके क्या सपने रहे होंगे, वो क्या सोच के उसने विवाह किया होगा, और आज उसकी जिंदगी कैसी है।
तो बस हम प्रार्थना कर सकते हैं ऐसी स्त्रियों के लिए जो कि इस तरह का जीवन जी रही हैं, जहाँ पे उनको कुछ अपने पति की तरफ से कोई अच्छी चीज मिल नहीं रही है. Sometimes the man, he said, this is the devotees community, said, I need a wife. And sometimes the wife or the girl said, I need a man. But this need has so many different grades of manifestation. I need a rich man. I need somebody to take care of my economy. And the man said, I need a wife so I can go around and can show, and can have a good time. Also, they have this, this is not right. And I'm going to go for the, why. तो हम भक्तों के सर्कल में भी, डिवोटीज में भी हम ये देखते हैं कि वो जो अगर स्त्रियां हैं, वैष्णवीज हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका एक पति हो. जो प्रभु जी हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी भी एक पत्नी हो, लेकिन उसका कारण कुछ और होता है. उसके पीछे का जो कारण है वो अलग होता है. जैसे कोई पुरुष होगा, वो ये चाहेगा कि मेरी सुंदर पत्नी हो ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि देखो ये मेरी पत्नी कितनी सुंदर है. जो लड़की है, भले वो भक्त है, फिर भी वो ये चाहते हैं कि जो लड़का है वो पैसे वाला हो, अमीर हो, सक्सेसफुल हो, ताकि उसके पास पैसे की कोई कमी ना रहे, वो खूबसूरत हो दिखने में, ताकि वो भी दिखा सके कि देखो मेरा पति कितना खूबसूरत है. तो ये चीज गलत है. इस भावना के साथ विवाह करना, इस भावना के साथ किसी के भी साथ संबंध में जुड़ना, वो गलत है. The best is for the man looking for a partner in devotional service. Somebody that will help him do his devotional service. And the wife for that too. Both will participate in devotional activities according to their ability. And, even with the profession and everything, and they will do the profession and they will preach. See, they work in tandem. They work in like a partnership. You see, that works the best. She has her back and you have her back. You see, and you have maybe a man have maybe a prominent stature, but in the house, generally, the wife has the control, and the outside, the man has the control. You see, so it works out very nicely. तो विवाह करने का, रिश्ते में आने का कारण एक होना. Are you there, Isha? We lost you. Is anybody there? Everybody's there? Okay, she's back. Hare Krishna. Sorry, Prabhuji. Sorry, everyone. Network was a bit problematic. Carry on. Yes. So, प्रभु जी ने ये कहा कि संबंध में जुड़ने का, कोई रिश्ता जोड़ने का कारण एक होना चाहिए, एक ही कारण होना चाहिए, और वो ये कि दोनों पति पत्नी दोनों मिलके एक दूसरे को भक्तिमय सेवा में लगा के रखें. पति अपनी पत्नी को मोटिवेट करे, पति अपनी पत्नी को उत्साहित करे कि वो भक्ति में सेवा करे. पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने पति को एनकरेज करे, अपने पति को आगे बढ़ाए भक्तिमय सेवा में. दोनों साथ में मिलके एक टीम की तरह एक दूसरे की मदद करें भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए. ऑफ कोर्स ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका व्यवसाय क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, जो आप काम करते हो बाहर जाके, जो आप मटेरियल काम करते हो, वो काम भी आपका डिस्टर्ब ना हो, और आपकी भक्ति जीवन भी आपका डिस्टर्ब ना हो. इस तरह से आपको मिलजुल कर काम करे. इसका एक अगर जोड़ा बनता है तो वो जोड़ा सबसे अच्छा है. और अगर जो पति है, जो पुरुष है, वो अगर चाहे बाहर अपने व्यवसाय में बहुत ऊंची कक्षा पे है, बहुत ऊंची पोस्ट पे है, लेकिन घर पे जब आता है तो जो स्त्री है, जो औरत है, पत्नी है, उसका ज्यादा प्रभाव होता है. बाहर के दुनिया में चाहे पति का प्रभाव ज्यादा हो, लेकिन घर में पत्नी का प्रभाव अगर ज्यादा रहे तो ही बहुत अच्छे से जीवन यापन हो सकता है. So, for the man, they have to be intelligent. Like, there's a lot of things going on. So, man is more intelligent than the women. The women hate that. They don't like it. And I can understand why. You see, the thing is, man is more intelligent, but not in the way you think, in the power to rationalize things. Women, yes, they have the emotions. Sometimes emotional intelligence is really good, like artists and different things.
See, men is more intelligent because they take more brunt from the emotional waters of the women. They have to, how to say, tolerate the emotional outbursts of the women. That's why the man is more strong. And the women is not wrong in doing the outbursts because that's the nature. You have to accept that. Just like Lord Shiva, he takes Ganga in his head. She comes to earth. She said, I'm going to shatter this planet here. My waters are so powerful. Shiva takes in the head Ganga Mai. The water is the emotion. You see? And he takes in the head, and from him, the Ganga becomes pacified and coming this earth and blessing all of us. तो शास्त्रों में जब ये कहा जाता है और जब स्त्रियां ये सुनती हैं कि पुरुष ज्यादा बुद्धिमान है और स्त्रियां बुद्धिमान नहीं है, ये चीज जब बोली जाती है तो लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है, स्त्रियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये स्वाभाविक है, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है, अगर हम समझे इस चीज को तो हमको पता चलेगा कि ये गलत क्यों नहीं है। पुरुष ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उसका कारण ये है कि वो स्त्रियों की भावनाओं को वो झेलते हैं। स्त्रियां भावनात्मक ज्यादा होती हैं, इमोशनल वो ज्यादा होती हैं। स्त्रियां बहुत आसानी से रो सकती हैं, स्त्रियां बहुत आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हैं, और वो जब व्यक्त करती हैं तो वो पुरुष के सामने ही एक्सप्रेस करती हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन, ये सारे जो भावनात्मक आउटबर्स्ट्स हैं, भावनात्मक चीजें जो हैं, वो पुरुष ही सहन करता है। उसकी वजह से वो ये सहन करते करते पुरुष ज्यादा बुद्धिमान बन जाता है, इसलिए वो ज्यादा बुद्धिमान है। और ये इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर स्त्री अपनी भावना को एक्सप्रेस करती है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे कि प्रभु जी ने उदाहरण दिया गंगा माता का, कि जब गंगा जी ऊपर स्वर्ग में से जब वो धरती पे आना चाहती थी तो उन्होंने कहा कि मैं अगर सीधे धरती पर आई तो ये पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। तो शिव जी जो कि पुरुष हैं, उन्होंने गंगा जी को अपने जटाओं में पहले स्थान दिया और फिर धीरे धीरे गंगा जी के जो जल है उनको धरती पे आने दिया। तो ये जो गंगा जी का जो जल है, जो इतना प्रवाह से आता है, जो इतने वेग से आता है, वो वेग ही स्त्री का इमोशंस है। वही वेग को हम बोल सकते हैं कि स्त्री की भावनाएं हैं, जो कि बहुत जोरों से व्यक्त होती है। और पुरुष यानी कि शिव जी जैसे उन्होंने अपनी जटाओं में स्त्री के ये भावनाओं को स्वीकार कर लिया, जगह दी, वैसे ही पुरुष भी ये करते हैं और इसकी वजह से वो ज्यादा बुद्धिमान है। The man is more strong than the women, not to force her or to subjugate her by force. He's more strong because he takes sometimes the strong emotional abuse of the women, which is nothing really for the man. Krishna gave us the power to withstand that, just like a little wind, just like a storm comes and passes. As long as the woman is chaste, the man will take anything from the women, no problem. You see, that's why we're stronger. Now, this strength, the women will accept. This higher intelligence, the women will accept. But the intelligence to subjugate them, no, this is no good. We use our intelligence to conquer their hearts, you see, and go and find out how to conquer the heart, because that's the whole point of bhakti. You see, we are conquering the heart of Krishna, and Krishna is conquering our heart too, you see, by putting us in different situations. You see, oh my God, Krishna, you did this to me. Oh, I love so much. Look what you did. I was so hopeless, and you gave me hope. You see, Krishna is conquering our heart, and we're conquering his heart by doing, our devotional service, by preaching, by going to a devotee and explain Krishna consciousness. You see, by being kind, human to the next living being. You see, it's a game, and we have to play that game, in our marital relationship. We have to conquer the women by love, kindness, and they surrender, just like we surrender to Prabhupada. Prabhupada didn't come here and said, you have to do this. You have, in the beginning, 22nd Avenue, see, Prabhupada didn't say you have to chant. You always say is that you have to take prasadam.
You see, and then you chant the kirtan, when everybody was there chanting. He didn't say anything else. He didn't force anything. You see, and then we saw, but Prabhupada, I'm doing this now. What should I do next? What should I do next? And then he started bringing the process of Krishna consciousness. तो पुरुष अगर बुद्धिमान है, पुरुष का अगर इंटेलिजेंट कोशेंट ज्यादा है इस चीज में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुषों को ये हक मिल जाता है कि वो स्त्रियों का शोषण करें, उनके ऊपर हक जताएं। उन्हें हक नहीं जताना है, लेकिन अपने इस बुद्धिमानी का उपयोग करके दया भावना रख के, प्यार से, प्रेम से उनके साथ बर्ताव करके स्त्रियों का हृदय जीतना है। तभी दोनों जन एक रिश्ते में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब 26 सेकेंड एवेन्यू में जब उन्होंने सबसे पहला इस्कॉन का सेंटर शुरू किया, तो जो विदेशी भक्त जो नए नए बने थे, प्रभुपाद ने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया, कभी भी उनको ये नहीं कहा कि आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी या वो चीज करनी ही पड़ेगी। प्रभुपाद ने केवल उनको यही कहा कि आप सिर्फ प्रसाद लो, और धीरे धीरे प्रेम से, अपनी दया भावना से और अपनी अच्छाई से श्रील प्रभुपाद ने जितने भी विदेशी भक्त थे, विदेशी शिष्य थे, उनके जो नए फॉलोअर्स थे, उन सबको धीरे धीरे भक्त बनाया। हम देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी भी हैं। तो ये उसी चीज की वजह से, यही प्रेम और दया भावना की वजह से है, और यही दया भावना, यही प्रेममय व्यवहार पुरुषों को भी स्त्रियों की तरफ रखना चाहिए, अगर वो उन्हें सही तरीके से, सही मायनों में उनको कॉन्कर करना चाहते हैं तो। So today, for the man, because see, you understand the man, how to deal with the women, you are actually protecting the Shakti of the women. See, you need the both of them. And the women understand how the man should act. She will guide the man to be in that way. Go ahead, Mata. तो इस चीज से हम ये समझते हैं कि पुरुषों को भी स्त्री की शक्ति की जरूरत पड़ती है। दोनों साथ में मिलके करेंगे तो ही अच्छे से आगे बढ़ा जा सकता है। स्त्रियों को भी ये पता चले कि पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और पुरुषों को भी पता होना चाहिए कि स्त्री का हृदय कैसे जीता जा सकता है। So today, for the man, I will give you the secret of secrets, Guyam, Mahaguyam, to understand the women. The women, close the ears. No, okay, you can hear too. Okay? Because in the lore, human lore, or the human society, since time, people try to understand the women. And there is poetry, there is books, there is movies, there's magazines, and so much discussion how to understand the psyche of the women. So today, I'm going to give the final solution. तो आज प्रभु जी सारे जो हमारे पुरुष वैष्णव जुड़े हैं हमारे साथ, जो सारे प्रभु जी जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही गुह्य, अति गुह्य ज्ञान देने वाले हैं कि क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से स्त्रियों को समझा जा सके। हमारे शास्त्रों में, हमारे लिटरेचर्स में बहुत सारे कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं कि जिसकी वजह से वो कोशिश करते कि स्त्री को समझा जा सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन प्रभु जी के पास वो ज्ञान है, तो सारे प्रभु जी बहुत ध्यान लगा के सुने, क्योंकि बहुत जरूरी है। And I'm going to tell you because Lord Krishna told me. और प्रभु जी आपसे ये कह रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी ये चीज कही है। Okay, he didn't speak directly to me, but he gave me the inspiration to understand this conclusion. तो ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण ने सीधे आके प्रभु जी से नहीं कहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने जरूर उनके हृदय में ये बात डाली है और उनको इंस्पायर किया है कि वो ये गुह्य ज्ञान समझ सके। I'll give you in a mathematical formula how to understand the women. Is a square root of -1. Those who works with math can tell what the answer is. The square root of -1, like the square root of 4 is 2, right? 2 times 2 is 4. What is the square root of -1? The number that multiply by itself, you get -1. What is it? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि ये एक गणित का सवाल है, मैथमेटिक्स का प्रश्न है
कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो जो स्क्वायर रूट होगा वही उसका जवाब है। Anybody? Yeah, big manus. Nobody knows. One person knows. Yes, Prabhuji, you can unmute. Yes, Harshit Prabhuji. Wait. Iota. How do I get the thing here? What is that? Iota Prabhuji, Hare Krishna, Dandavat, Iota. Okay. Yes. Tell me. Prabhuji, Iota. What is Iota. iota? That is under root, under square root. The उसके square अंदर root of -1. The square root of -1. Okay. For the sake of brevity, I will let you know. There is no solution for the square root of -1. There's no number that can come and be the solution for -1. Unless you go through a really, like a discombobulated type of mathematical universe that doesn't even exist. So, in other words, there's no solution. If you try to understand the women, Krishna made the women in a way that you cannot understand her. To the full extent that you need the analytical mind of man needs to understand. So then you're going to say, well, Bhagi, this is very simple. What is the solution? The solution is you start pay attention to other things. You leave the mystery leave a little mystery in there. Okay. And that is the solution. You don't pay attention in solving how to understand the women. We never will understand, because the women's made not to be understand. Because once the man understand the women, he's free of the material world. He just go there, chant, Hari Bol, finish. You see, Maya wants us all the time focusing what is here. Let's understand. Let's analyze. How is this, that? You see, we get always involved, try to figure out this thing. So if you already know that you're not going to get and understand fully this, you give a little room to be the way it is, and you've become preoccupied with other things that are important in your devotional service. तो जैसे प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि -1 स्क्वायर रूट क्या होता है, तो प्रभु जी ने खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि कोई बता नहीं पाया। तो उसका जवाब होता है कुछ नहीं, मतलब -1 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं निकलेगा, उसका कोई जवाब नहीं है। उसी तरह से स्त्री को समझना भी मुश्किल है, मतलब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। भगवान ने स्त्रियों को बनाया ही इस तरह से है कि उनको समझने के लिए नहीं बनाया गया है। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि अगर कोई स्त्री को समझ जाता है, स्त्री की साइकोलॉजी को अगर समझ गया, तो फिर वो इस भौतिक जगत से ही पार हो जाएगा। उसके हाथ में अच्छे से माला आ जाएगी, वो अच्छे से नाम जाप कर पाएगा, और सीधा ही शायद भगवान खुद विमान लेकर आएंगे उनके लिए वैकुंठ से। तो स्त्रियों को समझने की जरूरत नहीं है, उनको एक थोड़े सा स्पेस देना चाहिए। वो जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं, अपने जो भावनाओं को एक्सप्रेस कर रही हैं, उनको करने देना चाहिए। उनको समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा है स्त्रियों को समझने के पीछे पड़ो, इससे अच्छा है कि आप अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो अपने भक्ति में जीवन के लिए, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सको। So this is something that you meditate and becomes very, becomes something that you learn to assimilate inside your heart as the time goes by. Meanwhile, I'm going to just touch in one subject. I think it's important, and then we're almost about to end this podcast. तो प्रभु जी बस एक और टॉपिक, एक और विषय पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, तो वो भी आप तैयार रखिएगा। Okay. We have 30 something people in here. I think I finished this part. Then we're going to go see every one of you.
and then prepare to turn the camera on. We can, see each other a little bit like that. So this one is something that I want to discuss for a long time. Maybe a little bit strong, but I think sometimes strong is necessary for our protection in our understanding. तो प्रभु जी इस विषय पर जिस विषय पर प्रभु जी अभी बोलने वाले हैं, उस विषय पे प्रभु जी बहुत पहले से बात करना चाहते थे, और ये विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन कभी-कभी गंभीर विषयों पर भी चर्चा करना जरूरी होता है ताकि हमें हमारे जीवन में अच्छी समझ मिल सके. When we go home, or when you are home tonight, before going to sleep, we do here in my house, we check the doors, windows, all the doors here closed. It's a natural, right? We check our doors, everything. The door is always closed. You see? But that's one thing. One door that never closed, it's always open. And we don't see there's any dangers that can come from it and what that could be. तो हम जैसे सबके घरों में ये एक नॉर्मल तरीका ही होता है कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम हमारे घर के सारे दरवाजे बंद करके सोते हैं. एक दो बार फिर से चेक भी कर लेते हैं कि दरवाजा बंद किया है कि नहीं, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो हम बंद नहीं करते हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते उसके लिए. क्या कोई बता सकता है वो कौन सा दरवाजा है? This door is the screen of your computer. You see, this door is the screen of your computer. Now, there is some of you, you're adults. Some of you, you're not adults. You're teenagers. And some of you, very young. We used to have 13. We used to have 14, 15. The girl I mentioned in the beginning, she was like 14, 13 years old, you see. And so we have to be careful how we let people inside our home through the computer screen, particularly the young girls. तो एक जो दरवाजा जिसके बारे में प्रभु जी बात कर रहे थे कि हम हमेशा खुला रखते हैं, और वो दरवाजा है हमारे मोबाइल का स्क्रीन. तो आज हमारे साथ कुछ 20 से 25 भक्त जुड़े हैं. तो हम में से सब अलग अलग एज ग्रुप से हैं. कोई यंग हैं और कोई टीनेजर्स हैं, अभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हुए लड़कियां हैं, लड़के हैं. हमें ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम इस मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन के थ्रू किसे हमारे जीवन में आने दे रहे हैं. I'm telling you this because I have seen some horror stories. प्रभु जी ये चीज खास तौर पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रभु जी ने कुछ बहुत ही डरावनी कहानियां देखी हैं खुद इस मोबाइल की वजह से. There was a case in Vrindavan that this is a nice girl, but she wants to adventure in the world. And then she met this guy who talk, and convince her, come, you come with me, and after, it takes a while, but then you get the confidence, everything, you come with me, we get married, blah, blah, blah. She left the house and went with this guy, right? तो ये वृंदावन धाम में हुई एक घटना है कि जहाँ पे एक लड़की थी, तो वो एक लड़के के संपर्क में आई और लड़के ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से लड़की को अपनी बातों में फंसा दिया. कुछ समय लिया उसने, लेकिन जब लड़की उसकी बातों में फंस गई तो लड़के ने उससे शादी का भी वादा किया, और बस उसी वजह से लड़की ने अपना घर वर सब छोड़ के वो उसके साथ चली गई. Once she got there, in the guy's place, he introduced her to his first wife and tell her, you're going to be a second wife. This is okay. And, we're going to be a happy family. तो जब लड़की लड़के के साथ गई और जब लड़की उस लड़के के घर पहुंची तो वो लड़के ने अपनी पहली पत्नी से उसको मिलवाया कि ये मेरी पहली पत्नी है, तुम इससे मिलो और तुम मेरी दूसरी पत्नी बनोगी, और उसमें कुछ गलत नहीं है, हम सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहेंगे. This is a true story, huh? ये सच्ची घटना है.
जिसको हम आजकल लव जिहाद बोलते हैं. So she's living there, and then what happened that she becomes some kind of a maid servant of the couple, and she was not happy. What? No, this is not what I signed for. तो ये लड़की वहां पे गई, अभी वो घर छोड़ के चली गई है, तो उसको वहां पे मजबूरी में रहना पड़ गया उस लड़के के साथ में. लेकिन उसको बिल्कुल मेड की तरह, यानी कि एकदम काम वाली बाई जैसा ही बना के रखा उसको, सारा घर का काम वगैरह उसी से करवाते थे. और वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो ये सोच रही थी कि इस चीज के लिए मैं इस लड़के के साथ नहीं आई हूँ, इस चीज के लिए मैंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा था. So she tried to leave, and the guy would find her, bring her back, took her phone away. It was a big jamela. Finally, the parents started looking for her. You know, they found her there. Everything went up to the police station. तो वो लड़की ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो ये कर नहीं पाई, क्योंकि लड़के ने उसका फोन और सारी चीजें लड़के ने अपने पास रख ली थी पहले से ही, क्योंकि वो ये जानता था कि ऐसा कुछ ना कुछ भविष्य में होगा. तो लेकिन अच्छी बात ये हुई कि लड़की के माता पिता उसको ढूंढने लगे थे, और फिर पुलिस भी मामले में बीच में आई, और फिर पुलिस ने वो लड़की को ढूंढ निकाला. Now you study this case, but even the police in Brindavan, they were a little astonished, you know, because, you know, you see a lot of little kaka, you know, in Brindavan, but this was, no, this guy was an artist, you know, and so even the Brindavan police station, they were, wow, no, this is amazing. So anyway, go ahead, man. तो पुलिस ने उनको, उस लड़के को ढूंढ निकाला, मिल गया वो, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, और पुलिस भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई. जी. So I was thinking how the girl make a many mistakes. She made one mistake, then she made other mistake, and because she did this mistake, the other one comes in. It becomes a series of mistakes that she end up with her face in the wall. तो हम ये सोच सकते हैं कि हम ये देख भी सकते हैं इस घटना से कि लड़की ने एक गलती की, और उस एक गलती की वजह से एक के बाद एक गलती वो करती चली गई, और अपनी जिंदगी को उसने खराब कर लिया. So you better not start something that's gonna give you this kind of outcome. Don't take the first step. Don't play that game. तो आप लड़कियों को इस चीज के लिए बहुत सावधान होना चाहिए कि आप ऐसा कोई कदम उठाओ ही मत, कि ऐसी कहानी शुरू ही मत करो जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आप ही को दुख पहुंचाएगी. ऐसा करो ही मत. बहुत सावधान रहने की जरूरत है. You have to be careful. If you are a teenager girl, 13, 14, 15, 16, be careful who you befriend in the computer screen, because a man will say any flower word to get the women to do what they want. They will talk like honey, and we fall for it. तो जो यंग लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17 साल की लड़कियां हैं, उनको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए जब आप फोन पे या कंप्यूटर पे किसी दूसरे लड़के के साथ बात करते हो जिसको आप जानते नहीं हो, क्योंकि लड़के किसी भी तरह की बहुत अच्छी ऐसी ही भाषा बोलेंगे, वो ऐसे ही आपके साथ बात करेंगे कि आपको अच्छा लगे, वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे और आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आपको अच्छा लगेगा, जैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट बोलते हैं वैसा आपको देंगे फॉर द टाइम बीइंग, ताकि आप उसके झांसे में आ जाओ और फिर आप वो करो जो वो आपसे करवाना चाहता है. तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान की जरूरत है. So the women sometimes they fall because they're feeling alone and they feel, wow, these guys give me some friendship, and they start to form a bond between this boy and her, you see, and the boy ends up take advantage. Most of the time they do, if you do not know where he's coming from, where his intentions are, you see, you don't know his family, generally they're taking advantage of you. So we have to become en garde, and that's part of our superpower, to refrain
for taking the step to get us in a situation that will become very difficult for us. ऐसे सिचुएशन बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि आप किन लड़कों के साथ आप बात करते हो। अगर कोई लड़के के बारे में आप जानते नहीं हो, वो कहाँ से आता है, उसके बैकग्राउंड, वो कहाँ से है, उसका परिवार क्या करता है, कहाँ से उसका परिवार, ये सारी चीजें आप नहीं जानते हो, तो चांस आपके साथ बोलने का वो खोज कर कोशिश कर रहा है और आपको बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत ध्यान रखिए कि आप मिलते हो। बहुत सारी बार अगर लड़की आती है ऐसे लड़कों में, क्योंकि उनको लगता है कि वो अकेली हैं और उनको किसी दोस्त की जरूरत बता देते हैं। You okay there, Mata? You come a little broken. The sound. Yes, my voice is coming from you. Okay. So I feel I have to touch in the subject because there is actually boys, they looking into these platforms of podcasts and they looking, try to catch the women for their own personal use. Never trust anyone that comes like that. प्रभु जी के बारे में ये बोलना चाहते हैं क्योंकि She's coming back. I think she has a problem either with the microphone or some battery or something. Really? Okay. If can you contact her and see, because then we can do a very quick, we can finish. Oh, she's back. Hare Krishna. Let's see where she's going to appear. Hare Krishna. Isha, you there? Your microphone, I can hear you. What do you think, Prabhuji? So her microphone is not on. Yes, or you can finish. We're just going to go with the motions of finishing this podcast. You calling her? Yeah, you call her. Tell her a microphone is not working. We're not seeing the. Meanwhile, anybody has a question, has a comment or something, that wanna like say something, or we can put some understanding of some situation. Let's open up for some questions, and then we can discuss this. How are you doing, Gora? Good? Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Please accept me. हम लोग कैसे? Yeah, I'm doing good, Prabhuji. Thank you. Thank you so much. Yes. Okay, let's see everybody. Vishaka Gori and Pallavi Singh. Joy Murmu. I see you. Hare Krishna. I request all the devotees, please turn your cameras. Only the speaker and the translator. बस दो ही लोगों का कैमरा चल रहा है, बाकी सब लोग केवल ब्लैंक Somebody स्क्रीन दिख raised रहा a है. hand, but I don't see here. But yeah, go ahead. Open queue. Oh, I see. Oh. Okay. Hashit Kulashri. Okay. Okay, I see. Thank you. Okay, so what do we need here? Some questions, anything? That's heavy. Isha is coming Hare back. Krishna.
Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat, Yes. Prabhuji. Welcome I back, want to ask. Isha. Nice to see you again. Tell me, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Yes. Prabhuji, I want to ask regarding this session only. Question regarding this session only. Yes. The question is why is it difficult? Why is it difficult to understand why Lord Bhagwan Shri Krishna made them so difficult to understand? Well, because then your mind will be fixed on the women. If you figure out the women like a puzzle, see, man has analytical ideas, mind. Once you finish a puzzle, there's no more interest. So if you understand not one woman, but a women in general, you will lose the appeal the Maya Dev has on you. You see? So therefore, Krishna created in a certain way that you cannot figure out the whole thing, unless, of course, you figure out that it cannot be figured out. Then it becomes easy for you to understand. That is a part of the women force that you won't be able to understand because of a natural analytical mind. We like to see things in an analytical way, and the women is opposite of that. She works in the emotional, which is beautiful because she brings the women is soft part of the man. The man's hard-hearted. Sometimes it's mean. You can say mean. You are mean. You see. So the women soft the heart of man, a good woman. And a good man will let his heart become soft by the women instead of become more hard. You see, and that is the arrangement. It is a team. Krishna likes the teamwork, to see husband and wife working together for the goal of devotional service. He becomes very satisfied, and the guru also probably very happy. You see, so it's not like you cannot understand, but it's like that, and you just have to accept. And by accepting that it cannot be understood as you want to, you will be use the energy for other things that are more profitable. You see, instead try to figure this whole thing out. You just figure out the generalities, and the details. You just let Krishna do his job, and you do your job. Your job is to, devote yourself to Krishna consciousness. Now, if you want to understand something of a particular woman, let's say your wife, Krishna will let you know in the heart. You see how to understand that particular point, and he will give you that particular understanding in your heart. So you don't have to be worried about that part. So I'm just leaving this there because it's quite interesting. So I thought to share with everybody, and this is a topic that actually is it is very important for us. Some of you are very young, and you are entering relationships, and you are in relationships, and this thing help you to navigate through the situation better. Okay, the thing is, man and wife, they're like a team. You see, and how are we going to define this team is between you and your partner, and you have to do in a way that's acceptable for her. She has to do in a way that's acceptable to you, because this is devotional service. Krishna, he could force us to surrender to him. Do you know that? Krishna could force us to surrender. You surrender to me, or I smash you to the ground. And we know he can do it. We know he has the power to, and we know we cannot escape. He's Paramatma. He knows everything. Even before we think, he already knows. He could smash. But who wants to have a relationship with one he is complete force to be in that relationship? Krishna is not that kind of man, and we shouldn't be that kind of man either.
we should have a relationship based in free will or loving will, you see, and kindness. And that attracts better than a forceful way to control either the husband or the women. Because the women also try to control the husband in different ways, you see. So we should not use that, in either way. But women more, because they are in the weakened position, right? The 5 different living entities that have to be protected. One is the women, not the man, okay? Because the man take care of himself. The man can go and like in Italian, a charla, he can give a good talk to the women. Whatever happened, he goes to the next town, and the woman is there with a reputation down in the drain. And who's going to pick up the pieces? You see, therefore, she has to be protected, and she has to protect herself, you see, from this type of living entities. Because in this material world, it's always things are there. You see, you have to keep an eye. Not just you walk in the street, somebody try to get a wallet, or somebody try to trick you in something. The other day, somebody from Brazil called me and said, "Hey, somebody here has a bag from Brazil. Your sister," my sister is in America. She's supposed to get the plane to Brazil, but the plane was late, but the bag came, and you have to go to the airport in here and pay $5 to take her bag. She was telling a friend of mine that is in Brazil. And she called me and said, "Hey, was that true?" You see, this cheating mentality. No, it's amazing, And he said, "Look, don't worry. I know that is $10,000 in that bag. There's a suitcase, and you can pay $500 and get $10,000 from that bag." Then I know, no, that's not my sister. No way in the world would be my sister there with $10,000 in the bag. Cheater, and he has documents, he has everything, but just so amateur. But you see, there's cheater and cheated, Prabhupada said. And it should be very careful, because they take on more than the man. You see, the man always go to the next town. It's finished for him. You see, but the woman, she stays back. Where does she go? Therefore, for her, she takes care of her ability of education. She becomes proficient in a particular profession that she can rely on it in case anything goes, that she needs that profession to survive herself, to take care of herself. Otherwise, she's always going to be under the somebody that maybe not has her best interest. Oh, I'm sorry, Mata. I forgot. You just give the gist, Please, my apologies. Thank you, Prabhuji, for such an insightful answer. Of course, I cannot translate everything, but yes, ये प्रभुजी ने यही कहा कि स्त्रियों को समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको बनाया है इस तरह से है। और अगर आप, जैसे प्रभुजी ने पहले ही बताया, कि अगर आप ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपका मोह माया ही चला जाए। तो टीम में आपको रहना चाहिए, ये जरूरी है। और स्त्रियों के लिए, जैसे ये पूरे आज के डिस्कशन का मेन विषय ही ये है कि जैसे स्त्रियों को कैसे पवित्र रहना चाहिए, तो स्त्रियों को ये चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आपका गलत तरीके से फायदा ना उठाए। स्त्रियों को भी एक तरह से पुरुषों की तरह थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत रिश्ता आ जाता है तो पुरुष तो आगे बढ़ जाएंगे, उनको ज्यादा कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन स्त्रियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो इसलिए स्त्रियों को अपने आप को एजुकेट करना जरूरी है, स्त्रियों को अपने आप को शिक्षित करना जरूरी है, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उनको अपने हिसाब से रहना पड़ जाए कभी, तो उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, वो खुद अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सके और भक्तिमय जीवन में जी सके। क्योंकि अगर आप संबंध में हो, रिश्ते में हो, तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल करे, ये सही नहीं है। ना स्त्री पुरुष को कंट्रोल करे, ना पुरुष स्त्री को कंट्रोल करे। So I think that is what I could share, Prabhuji. Thank you. Thank you so much, Mata. So I want to thank you all for coming here. I really have some great appreciation from all of you. I see all your faces. You're very serious. You're hearing
and there is one Mataji here, Vishaka Gurui. She's in the rickshaw, or in the car or something. Anyway, I appreciate that. She's running the car, she's banging around, good. So thank you, Mata, for coming. So I appreciate you all. You see, me and my wife, we are the servant of the devotees. We dedicate our lives to do this, what we're doing now, to give a little bit of the experience we have for the next generation, because there's nothing more beautiful than a young generation coming and taking up Krishna consciousness. You see, there's nothing more beautiful than that. Give me great enthusiasm. And I think Prabhupada, he would be very happy. Prabhupada would give this big smile. You see, I remember when I came, I saw Prabhupada first, right? I came in Mayapur, and Prabhupada was, we came here, we immediately took showers, saffron robes, shaved head, we all prepared. We came from America, all the big airplane, the famous. I tell you about this trip in this airplane, was a famous airplane, that's amazing. So anyway, full of devotees, like 80% all devotees, prasad in the plane. It was a big party. So we came in Calcutta, that they did actually big, they make bigger for the 747, the first time the one came in Calcutta, right? The first one. So we went to Mayapur with the buses. We get in Mayapur, took shot, let's see Prabhupada. So we went there where the devotees from Brazil, and Ridananda Maharaj, he took us to the second floor here in the veranda, what proper room is. You come here, you see proper room. And you look at the door, you see the side of Prabhupada. The Gadi was facing forward towards the wall. Prabhupada was sitting there holding his leg, and smiling. He was relaxed. And Vidayananda, he entered the room. He made a space, and his hand gesture. Here, Srila Prabhupada, here are the devotees from Brazil. And Prabhupada turned his head. He looked at us. We just, the door frame, and you have these heads, boom, 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 this head sticking out, and we just, complete in bliss. And Prabhupada opened a huge smile. It was like the sunshine coming in the room. You see, he was so happy. And it took me a while to understand what kind of happiness is that the Prabhupada was giving, why he was so happy. Because at that time, Brazil was like at the end of the world. What's Brazil, South America? That's in the 70s, that is the end of the world. There was no telephone, there's no WhatsApp, no internet. You see, you make a phone call, it takes like 3 days, you have to book the call and wait, and they may call you. So Prabhupada was happy. He was thinking, this from Brazil, devotees from this place called Brazil, which is in the other side of the world. You see, so Lord Chaitanya movement went all the way to Brazil. You see, went all the way to Terra del Fuego, in Chile, in Argentina, there was 2 Argentinians with us, you see, and he was happy. It's not just Americans, Europeans, from South America too, they're coming. From Lord Chaitanya is Prithivite Ache Nagara Adigram. You see, every town and village. And Brazil was getting big on that. After Mayapur, after India and America, Brazil was the 3rd country to have more temples and book distribution like that. The devotees were really good. So Prabhupada was very happy. And I think Prabhupada see this beautiful Indian youth, taking Krishna consciousness, all of you, some of you, not the youth, but still, you are in the boat of the youth, and Prabhupada would be very happy. You see, so you should carry this happiness in your heart, and don't lose heart in devotional service, because there is many challenges, but together we can survive the challenges. Prabhupada used to say, Aisha's gonna kill me, and Prabhupada used to say, one stick I can break, right? I take one little stick, the broom, there's a broom, you clean the floor.
it's made of little sticks. One stick I can break, but you get many together, you cannot break. This is our strength. Okay? So, Isha, my apologies. I got a little bit past No, 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 Prabhu जी, no. So, प्रभु जी ने ये किस्सा बताया कि जब उन्होंने पहली बार जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद से मिले, जब उनके दर्शन किए, तो प्रभु जी ब्राजील से हैं और साउथ अमेरिका, मतलब तो ब्राजील मतलब कि दुनिया का आखिरी, जैसे हम बोल सकते हैं कि आखिरी छोर है। और जब श्रील प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस करवाया गया, प्रभु जी के साथ दूसरे भी भक्त थे, तो प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस करवाया। प्रभुपाद बैठे थे कलकत्ता में, जब भागवतामृत प्रभु और दूसरे भक्त प्रभुपाद से मिले पहली बार कलकत्ता में, तो फ्लाइट से आए थे जस्ट और सीधा प्रभुपाद से मिलने गए। और प्रभुपाद को जब बताया गया कि ये भक्त है वो सारे ब्राजील से आए हैं, तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत ही सुंदर सी एक मुस्कुराहट सबको दी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रचार है, संकीर्तन मूवमेंट है, वो ब्राजील जैसी जगह पे भी पहुंच गया, जो कि दुनिया का एक आखिरी छोर माना जाता है। तो वहां तक पहुंच गया, मतलब कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हर नगर में, हर गांव में हमारा नाम का प्रचार होगा। तो वो चीज अभी ब्राजील तक, अर्जेंटीना, चाइल्ड तक भी पहुंच गई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ये चीज, कि इतना अच्छे से संकीर्तन हो रहा है। तो प्रभु जी आप सबको देख के बहुत खुश हैं। ही इज वेरी थैंकफुल कि आप सभी और बहुत अच्छे से आपने सुना, अच्छे से श्रवण किया। जो भी प्रभु जी ने कहा, इतने प्रभु जी ने टॉक दिया। और प्रभु जी बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ये जो खुशी है, श्रील प्रभुपाद आप सबको भक्ति करते देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आप इतने कम उम्र में आप कृष्ण भावना भावित हो गए हो। तो आप ये खुशी कभी जाने नहीं देना अपने मन में से, और सतर्क रहना, अच्छे से काम करो, और प्रभुपाद के जो भी प्रभुपाद ने बताया है उन चीजों को फॉलो करिए। यस प्रभु। Okay, so first I want to thank you, Isha. Isha, beautiful. You did fantastic job in there. My apologies. You must have a memory of a demigod, to be. No, प्रभु जी। And Sorav and Gora, thank you so much. Everybody, thank you. I think Anuradha, I think she left. She has appointment. And Neha, thank you so much for your superb kirtan. You really like it. And I want to develop, get 2 microphones, you let me know if you need help on that. We figure out something, okay? You get a microphone, and you can do 3-4 minutes in the beginning, So I thank you all. Does anybody has a super question that you cannot sleep tonight? We can make a super question. Somebody raised the hand or open queue. Let me see. Sudipta Paul Prabhuji and Harshit Prabhuji. Yes. Sudipta Prabhuji. Yes. Tell me. Hare Krishna Prabhuji, is my audio clear? Yes. Hare Krishna Prabhuji, take my humble obeisances first. Prabhuji, the question was like you said that women must become more practical like men that they are right now. So how can women these days become more practical like men? That was my question. Okay. Thank you, Sudip. But actually, I don't remember saying the women has to be more practical. I think man has analytical mind. Women, his emotional mind is more prevalent. You see, you let the women be women, and you be the man, and you guide them with loving and care. Sometimes the women guide the man. You see, so the relationship depends of how you interact with each other. Don't be so attached to a false ego that the women cannot direct me or can tell things because I know better. You accept, and she accepts you. That is the dance. This is the dance that makes a marriage a fruitful, progressive. You see, beautiful. Okay, is that you happy? Yes, Prabhuji, I got my answer.
Thank you. Harshit Kulashri, you are hiding there. Let me hear you. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat. Yes. Prabhuji, my question was regarding this session only. If women have very kind heart, means they are emotional, then why nowadays boys, those who are very sober, getting cheated by those very women? Why it's going on like this? Because the women, she has to have kind heart and she has to be pure also. Purity is the force. You see, kind heart is okay, but purity has to be there because the women is not being trained properly, and that's what we hear, right? And because she finds so many teacher men that cheat them in the heart, so they become also cheaters. They become they become bitter, you see, and they want to actually, just get in the case of the man or something. So you have to see that the kind of women that you're associating with, okay? And the women has to be pure and have the good and a nice heart. Sometimes it's said that's the other way around. Women has a heart of, like a thorns, and they can be very, very mean, you see. So you don't want to see that side, and you act in a way that side won't come out. And men too have, but the man when it's mean, they can become, extreme, and there is violence, and there is, and there's so many things. So we should never go to that side. Man has to be tolerant, okay? Just like Lord Shiva. He sits in there and he takes the beating of Mother Ganga. Actually, it's not a beating, but, she's very powerful. You see? And he doesn't, he doesn't react with anger or anything like that. Not to Mother Ganga. So we are stronger because we can take that abuse with tolerance. Otherwise, what is there so special about the man? He's just a brute force, and who wants a brute? Nobody wants a brute. If the man has to beat the women, he already lost the argument. Very simple. My mother used to say, don't beat a woman even with a flower. You see? And anyway, I taught my son that, and he told the principal in the school. He was like 10 years old, and the principal loved it. Just so good. My father said you shouldn't even beat the woman with a, so many stories. So you shouldn't hit the women because once you do, you lost the argument. Because what are you gonna do? Every time she does something wrong, what you're gonna take your whip, and that's not work. Krishna, he don't conquer the living entities by brute force. He has material energy, but the material energy is taking care of us by our own faults, by my own mistakes. Krishna don't get involved too much with that. Krishna don't have to conquer the devotee. Sometimes I hear the voice saying, "Hey, Prabhu, this happened to you." Krishna is smashing you, huh? Krishna don't smash anybody. Krishna actually, when you feel the pain, Krishna feel the pain too. He said it's not a heartless person. You see, he's there commiserating with you. You understand? So we have to be in the middle area there and be very wise. See, this whole thing, we have to be a wise person. And that's our strength. That's our intelligence for the man. Any more questions? You okay, Harshit? You good? Thank you so much, Prabhuji. No problem, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat. Yeah, this is a long discussion in there, you see. But the thing is, there's a way we should do this, and that is conquering the heart. And see how Krishna conquered our heart. We can use that to conquer other people's heart. In our preaching, you're dealing with the other Vaishnavas, even dealing with our spouse. It's basically the same.
Okay, I have some question here. This is actually my question is how identify that the person is right or wrong. As you say that the men say words like honey, how identify that this honey is really sweet or is just for their own benefit? Please explain. So how are women or girls can identify that the man is like not lying or anything like that? Yeah, first thing is the man's prone to say sweet words when they want to manipulate the women. Women should always know that. Okay, it's no big secret. Okay, but when a man consistent has his by the activities of the man, you know how his bona fides are. When he consistently doing the good work of devotional service and he's responsible and he's doing the good work, then you understand that it's a good person. You see, the fruit is the activity, but the activity you define the person. Well, some people they say good things, but they do not so good things. You have to develop the wisdom, okay, to be able to see that. Now, does the man are following his Gurudev? You know, does he have authority, or is he acting freely by himself? You know, if the man has authority, he's following his Gurudev, he's following his senior god brother, then he's confer, you know, uh, he's taking advice from senior god brothers, you know, and you can see a person who is the good heart, and you see a person that is, you know, and I tell you, sometimes it's difficult to see. So time will tell. Time will tell. There's so many people, very nice people, and then they do some strange things. So you just have to be very careful with that. And it's not all the way around. And that's okay. There's not a formula for everybody, but you see, let Krishna reveal the person if the person is not sincere. Okay? And if the person is sincere, Krishna will reveal that too. Isha, thank you so much. I'll leave that. Who that question? Okay. You okay, right? Sika Prabhu, what is that? Sika Yadav. Okay. Sika Yadav. I can't see your photo, see there, so I don't know. Is Sika Yadav is a Mataji or? She's a Mataji. She's a My girl. apologies. I thank you all for coming here. So we're gonna go next time. Welcome. Thank you for Sorav. Gora, I forget. I love feedback. When you write to me last time, so many people wrote, and need glorifications and this and that. I need, because right now the people here, they're very, very smart. They tell I like you, and they try they like you. You see, and perfect sense, you know, and I like that. You know, I like to see how I'm doing, and it's nice. Thank you much. Okay, you give me feedback, right? And I want to hear from you all. And then next time we have more questions, because this is a good subject. The more you understand your position to the Shakti of the women, the more you make your advancement. Somebody's coming. Okay, my son just arrived. Thank you, PP. Hey, PP, 1 minute. Adi, guy, I want to talk to you. Yeah, I'll solve the problem. Okay. Thank you. Some late message. So thank you so much. You all bless me so I can continue to do this job. And I hope I can do this very nicely. And thank you so much. Okay. Thank you. Okay. Did great. All right. So we're going to, okay, let's find those microphones. Haribol, with our permission,
Gora, can I go? No, Prabhuji. Isha, can I go? Thank you so much for your use of time and such an insightful lecture. I think all the women need to hear this. Thank you so much. You like it? It's good, huh? It's a good.